करुचि हेलो हाय गाइस वेलकम टू ओएस हब केमती अच्छा मो आवाज सुबु क्लियर सुबु ओके स्टार्ट करिया देखि दिए ओके एनीबॉडी कर जो ओके कमेंट सेक्शन में समस्त जवाब दियो वेरी इंपोर्टेंट क्लासेस सो इथरे हमें डिस्कस रिगार्डिंग पीवाईक्यू डिस्कशन एक्चुअली पीवाईक्यू डिस्कशन आज पई काली माने जो अपकमिंग हमर टेस्ट सीरीज से टेस्ट सीरीज पई हमें एटा गोटे वैल्यू एडिशन क्लासेस लीडरशिप क्लास जो थरे आपण टेस्ट सीरीज लिखिबे ए दिन से टेस्ट सीरीज पूर्व जो टॉपिक अच्छी मानि नियंतु हमर सेही टॉपिक ऊपर हमें हाय हाय राजपति जो माने मेंस दउचंती बा जो माने थरे पढ़ी सारी जंती ये सिलेबस कंप्लीट ता पई ये क्लास टा हेल्पफुल माने बिल्कुल पढ़ी नांती बिल्कुल स्टार्टिंग फेजेस अछंती तांको पई से अनुसार आपण माने तो विल डिस्कस रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये ओपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम रो पार्ट मेंस रो मेंटरशिप रो पार्ट ओपीएससी मेंस will discuss every day few questions of previous year discuss every day few previous year questions regarding this okay so जेमती 2023 रे 23 रे क्वेश्चन आसीथिला हमें वन बाय वन डिस्कशन करियो एनालाइज द कल्चरल अचीवमेंट ऑफ महा मेघवाहन will discuss the main principle of अलेख महिमा अलेख धर्म या महिमा अलेख धर्म कौन
What is the role of INA trials? They in facilitating the process of Indian independence. Very important. Modern history part is the history part. Modern history. Similarly, give the outline. Out a question. Modern history part. Give the outline of the Swadeshi movement in Bengal between 1905 to 1900. Tells everything classes. Critically analyze its impact on. It's also modern history of question. So modern history ରୁ ଚାରିଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାରିଟା क्वेश्चंस ଆସିଛି जोटा कि 15 मार्क लेखाए 15 मार्क लेखाए चारिटा क्वेश्चन सॉलिड 60 मार्क तुम अटेम्प्ट करके आसी पारि देन तापर डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव सिटी एंड स्मार्ट सिटी describe the feasibility of best smart city economy of Odisha reflects paradisical briefly discuss the region and other part of basically geography smart city generative city smart city part of basically current affairs. Chennai and Mangalore approximately lie in the same latitude, yet both places receive different marks. Why? Why do basically important question? बढ़िया question. काफी भल से बुझी एटा को आंसर. Difference between why do foresee the role of Arctic month? Arctic sea role कौन? Then differentiate between state and east. Describe state and east. Discuss details the role of regionalism in shaping the social cohesion. What do you understand by population age? Discuss its various dimension in the context. ये क्वेश्चंस आसीथिला सब दे आर ऑल आस्क्ड एग्जाम सिमिलरली अब किसी क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइबल्स आर इन देयर इन ओडिशा what are the issues of and problems of particularly vulnerable tribal PTG very important thus some important causes of rural poverty thus some poverty alleviation program which have been launched by government of India 12 ରୁ 10ଟା କରିବ similarly enumerate the legacy of early Vedic Aryans Aldi जो part of history but ये cultural part रे भी नहीं हबो the legacy of early Vedic Aryan ର तांको an account of development of science during the Gupta period. Give an account of development of science during the Gupta period. So ये 20 20 40 এবং ସିଏ 60 total 100 marks ର then define India into a major physiographic division and describe the region in which ये भी गोटे question does climate change make coastal and Himalaya region India more vulnerable to geography रे आपण एटी 40 मार्क पाखा the women's organization these are society part
एथरू पांचटा करियर all question you have to attempt here. And poverty elevation program ये भी society रो पार्ट ट्राइबल तुम्हें ज्योग्राफी रो पार्ट नहीं पारो ये ज्योग्राफी रो पार्ट ये ज्योग्राफी रो पार्ट ज्योग्राफी रो तुम्हें बहुत क्वेश्चन जर्नलिज्म यही सब ये कांसेप्ट तुम सोसाइटी रे पाइबो चल कोहेजन how do you understand a population aging and discuss the various dimensions ये भी सोसाइटी रो पार्ट सोसाइटी रो ये दीटा क्वेश्चन सोसाइटी रो ये खाली कैन टेक ज्योग्राफी 4 15 60 100 ज्योग्राफी रो भी 100 बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस सोसाइटी रो ये भलिया सेग्रीगेट करी की क्वेश्चन करिछि ओके तो क्वेश्चंस बर्तन देखिबा प्रथम क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन analyze the cultural achievement of Hamego Mahamegavahana, the ruler of Kalinga in the first century, stands out as one of the ancient India's most remarkable monarchs, known for his religion, artist, cultural, religious, ଆଉ କିଏ କାହିଁ ଜବାବ ଦଉନ କାହିଁକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ his reign recorded in the famous Hathi Gumpha inscription at Udaygiri near Bhubaneswar portrays him as the patron of art, architecture, religion, and learning, symbolizing a golden age in Kalinga's. तो ये गोटे इंट्रोडक्शन भाई देल खारबेल मेघवान ऐरल खारबेल फर्स्ट सेंचुरी मोस्ट रिमार्केबल मोनार्क या कल्चरल हो रिलीजन हो या आर्टिस्टिक हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन ने आमे जानी पारलु विषय इनफॉरमेशन आर्ट आर्किटेक्चर रिलीजन लर्निंग एंड सिंबलाइज ए गोल्डन एज द कलिंगा सिस्टम खारबेल कल्चरल अचीवमेंट खारबेल कल्चरल अचीवमेंट कौन पचार क्वेश्चन अचीवमेंट खारबेल इंट्रोडक्शन देदेले यार वैल्यू एडिशन की प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर he undertook the renovation canals fortification temples destroyed during the earlier invasion Udaygiri and Khandagiri caves carved during his reign exhibit exquisite Jain art Jain art and rock cut architecture such as Rani Gumpha तो बेसिकली जदि 13 इयर पर्यंत रेन पर्यंत हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन मेंशन ताकू केमिति स्कैन करिकी ताकू केमिति सारांश बाहर करिकी एठी लिखि कल्चरल अचीवमेंट माने आर्ट एंड आर्किटेक्चर रो पार्ट गुटे ना नहीं
then religious tolerance and patronage. Kharavala's support for Jainism notable. Support for Jainism is notable, though he practiced religious tolerance, promoting various faiths. He renovated Jaina monastery, sanctified caves, Texas, especially the Udayagiri and Khandagiri. Structure adorn the intricate carvings and are the masterpiece of the early Indian rock cut architecture and reflect his artistic. Encouragement of the music and dance. The Hathigumpa inscription mentions his patronage of performing art, festivals, gathering of the musicians, highlighting a vibrant cultural life. Hathigumpa ସିଏ perform କରୁଥିଲେ art, festivals, gathering ସବୁ ଯେଉଁ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ତାପରେ and literary and linguistic development. Kharavela also contributed to literature, language. The use of Prakrit represent a significant development in graphic and linguistic tradition. से जो हाथी गुंफा inscription लिखिथिले कोउथि लिखिथिले हाथी गुंफा inscription रे से प्राकृत लैंग्वेज लिखि तो प्राकृत लैंग्वेज रो significant development एही समय मिली linguistics tradition making him a early promoter of vernacular expression royal inscription. So literary and so basically literature and language very important and language बिना literature हवा मुश्किल. Tradition एवं vernacular language खास करके प्राकृत के. So what do you mean by epigraphy? Anybody? What do you mean by epigraphy? Epigraphy माने writing inscription. So through his visionary leadership, Kharavela not only restored Kalinga's political patron after Ashoka's conquest, but also transformed it into a flourishing center of religion, art. Legacy endure his model of cultural rest and enlightened patronage in ancient. Okay, so आमे खारवल विषय रे क्वेश्चंस अनुसार आंसर बट कथा ला वैल्यू एडिशन कथा कुआ जाय हां मेगावान डायनास्टी a pivotal role in India's history. Kalinga, a region abundant in cultural rich, held significant importance even before the Kharavela time. प्राइमरी इनफॉरमेशन आमर बेसिकली हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन मिलता डिटेल रेकर्ड थिला एंड मंचपुरी केव कंक्वेस्ट खारवेला बहुत पावरफुल थी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस ambition led to express Kalinga's some of his notable victory कौन triumph for the सातवाहन हरे ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ କୁ ଆହୁରି ସଲିଡିଫାଇ କଲା ଏବଂ ତାର ପାୱାରଫୁଲ ଫୋର୍ସ ଭଳିଆ ସିଏ ଦେଖାଗଲେ ଏଇ ରିଜନରେ ଲୋକେ ସବୁ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଡରୁଥାନ୍ତି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଅଫ କଳିଙ୍ଗାଜ ବର୍ଡର ଏକ୍ସପାନ୍ଡ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗା ବର୍ଡର ବଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର କରିଦେଇଥିଲେ ଖାରବେଳ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ କଳିଙ୍ଗା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ brought new terry under
कि किंगडम को सी पूरा मथुरा पर्यंत पळैथिले डेक्कन पर्यंत पळैथिले एपटे पाटलिपुत्र पर्यंत पळैथिले expedition to North India and Deccan. Campaign showcased Kharavala's ambition, establishing his presence a wide swath of the Indian subcontinent. Administrative beyond military achievement, a crucial administrative reform करथिले, prosperity and stability. The infrastructure development, construction of roads, reservoir, connectivity improve करिया पई and water management within the kingdom. Not only facilitated trade but also enhanced the quality of life for his people. Trade and commerce promotion, recognizing the importance of the youth. Kharavala implemented policies that encouraged trade and further contributing the Kalinga's prosperity. Here, so ତାଙ୍କର administrative reform, military conquest, ଚାଲିଛି and architecture marvels. So basically पर्यंत ସେଇଟା ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ଲେଷ୍ଟ କରିବେ କି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସେହି ସମୟରେ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିବା ଉଦୟଗିରି ହିଲ୍ସକୁ ଜୈନା ମଙ୍କ୍ସ ପାଇଁ କାଟିକି ବନେଇବା ଓକେ ୟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସବୁକିଛି temples, palaces and fortification କରିଥିଲେ Kharavala commission construction of numerous temples, palaces, fortification reflecting commitment, religious and of his the great architect marvels is Kharavalankar. Right or wrong? And dance. Kharavala nurtured this art form and enriched the cultural landscape of the country and leaving behind the legacy of artistic sculpture and architecture. Magnificent Udaygiri and Khanderi have stand a testament to the Kharavala's pattern, showcasing the artistic. Here, these are things done. Then खास करके religious तो ये already हमें पढ़ी सारी चीज़ harmony, Jainism support कर environment of tolerance, ये समझ का mutual respect. His reign witnessed the construction of significant religious monuments, reflecting his inclusive approach. ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ତାଙ୍କର contribution जोंटे की subsequent ruler उपरे मध्य impact करथिला. Facing his administrative practices and cultural patronage, shaping Odisha cultural heritage. Kharavala legacy is deeply थिला हमर cultural heritage Odisha identity. Next देखिवा discuss the main principle धर्म और महिमा. I hope तुम्हें समझते कहीं ना कहीं महिमा धर्म या अलेख बाबा ऊपर तुम्हें शुणी थी नहीं अलेख धर्म या महिमा धर्म ये मोनोथिस रिलीजियस मूव समय होता ओडिशा रे किए कोई परिबो कार आइडिया अछि 19th century अराउंड आइतला it emerged a protest against idol worship, caste discrimination, social injustice prevalent in Hindu. The religion was founded by Mohima Ghosh. Then तापरे
तांकर डिसाइपल तांकर छात्र थिले फॉलोअर थिले भीम भई जानिच भीम भई एंड महिमा धर्म या ऊपर क्वेश्चंस आसे तो ये क्वेश्चन सेठी पचर बर्तमान देखिबा प्रिंस महिमा धर्म केबे हितला कहा एग्नेस्ट रो मूर्ति पूजा कहा एग्नेस्ट रो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहा एग्नेस्ट रो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एग्नेस्ट अलेख धर्म या महिमा धर्म गुसाई से ना he believe in one formless of he believe in one formless of God आकार भी अलेख तांकर किछि लेख नहीं लेखा नहीं फॉर्म नहीं फॉर्मलेस वन होई इटर्नल होई जो omni present and is indescribable तांको के describe करि परिबो तो अलेख धर्म कोन करथिले इटर्नल के अलेख अलेख इज इटर्नल omni present सबआडे अछंती एंड indescribe तांको describe करि हबन तांको होबनी से hence sect reject idol worship ताको एवं spiritual realization emphasis from meditation and devotion rejection of caste and ritualism rejection of caste and rejection of caste and ritual Mahima Dharma strongly oppose caste hierarchy priestly domination पूजारी माने ब्राह्मण माने पूजा करन तांको डोमिनेशन चेक करथि रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस पूजा वगैरह प्रैक्टिस promote social equality and brotherhood where all humans are seen as a equal before very important social equality brotherhood तो मैन कौन कौन बुझी पाला नहीं एमती भक्ति मोमेंट ताको भक्ति मोमेंट रो पार्ट को जाए emphasis on simplicity and asceticism ये simplicity ऊपर ध्यान दियंती एंड asceticism the follower live as a simple life austere life austere माने बेसिकली पेनफुल लाइफ बहुत लग्जरी फुल लाइफ नहीं practicing non violence vegetarianism and truth the ascetics known as mahima sadhu renounce worldly pleasure follow strict spiritual discipline worldly pleasure को से छाड़िले practice कौन था नॉन वायलेंस vegetarianism so point गुड़ा very very important try to write it down महिमा अनुसार एस्केटिक्स माने को माने साधु महिमा साधु माने से माने अलगा प्लेजर को छाड़ी देबे वर्ल्डली प्लेजर strict spiritual discipline spiritual liberation या मोक्ष the ultimate goal of life the supreme या अलेख for self realization and detachment from material desire
detachment from material. चला कौन कौन पॉइंट आमे देखिले मेन प्रिंसिपल चला बिलीव इन वन फॉर्मलेस गॉड देखो rejection of caste and ritualism, emphasis on simplicity and ascetic, liberal spiritual liberalism, moksha. Ultimate goal of life is union with supreme, that is supreme kiye supreme god, emiti through self realization and detachment from material desire. Material desire ru humanism and compassion. Last point है humanism and compassion. The teachings they service to human, based on service to human and compassion for all living beings. Timo Voice famous saying से कहते कौन ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ମାନେ କଣ सर्विस द ह्यूमैनिटी सर्विस ऑफ द गॉड या ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ let my life sink into the hell if the world can protect the religions humanistic deep humanistic these are महिमा धर्म these are principle चारि पांचटा पॉइंट अच्छी पांचटा खंडे पॉइंट अच्छी ताको रिमेंबर करो मन बिलीव इन वन फॉर्मलेस और rejection of caste and emphasis on asceticism, spiritual liberation या मोक्ष, humanism and compassion, very important. Alekho या महिमा धर्म not merely a religion, but is also a social reform movement that sought to uplift the downtrodden, eradicate caste of को अपडेट करिवो और कास्ट द्वारा जो it blended spiritual mystery, leaving a profound influence. Thus, just वैल्यू एडिशन चाहिए महिमा धर्म या महिमा स्वामी चाहे देखिपर 19 सेंचुरी पुरी आसते देन से एस्टाब्लिश कले महिमा where he began spreading his teachings due to his practice of he was commonly referred to as Priya Baba, Priya Gosai. Mohima Gosai engaged in discussion on non-dualism या द्वैत with Pandits of Mukta at the Jagannath. Where he strongly opposed the idol worship for finally settling in Kapilas, he lived in Udaygiri, Khandagiri and Dhauli. His ascetic lifestyle was marred by a wearing of bark. The recognize spiritual King Bhagirathi Maharaj Bahadur of Dhenkanal arranged for milk and to him. He established the dharma, emphasis on Dvaitavad, belief in one. Mohima Gosai disciples came to know Dvaitvas. First 64 siddhas, Avadhutas basically, Avadhutas, the first 64 siddhas, Mohima Dharma,
a title given when by attain perfection. Mahima Gadi, the seat of the Mother, located in Joronda Motto Deccanal, where the prominent Magho Mela, prominent Magho Mela, जोटा कि annually हुए एबे भी हुए Magho Mela. The propagation of extended across the district like Kataka, Puri, as well as area in Dhenkanal, Athagad, Tol, Oud, Bolpur and the movement gained wider acceptance among the tribal communities and those considered lower the Brahmanic. या उपरे ये महिमा गोसाई सॉरी महिमा गोसाई मेन डिसाइपल भी कोई ये बेसिकली सेंट पोएट थिले प्लेड ए पाइवटल रोल इन स्प्रेडिंग द 1885 रे जन्म हेले रेढ़ाखोल रे कोंद कम्युनिटी रो आस्ते कोंद ट्राइब पेरेंट्स वर धनेश्वर भुई एंड गौरी. So traditional belief he have been blind from birth and remain divided on this. So basically तांकर teaching हमें चाहिए देखीदेव भई एंड महिमा धर्म या उपरे भी क्वेश्चंस आसी पारे. So जदि हबो तो ट्राई करिवो देखिबा पाई. Verses were composed of orally and later transcribed, which highlights the oral tradition of famous assertion ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ये बेसिकली एजुकेशन थिला. आउ किछि पर्सपेक्टिव जो आइडियल ऑफ नॉन दुआलिज्म ऑफ गुरु सेंटर यूनिवर्सिटी सिंगल फैमिली जो was very important practice the impact of ये टोटल वैल्यू एडिशन पाई परिबो जदि नोट चाहबो ओएस ऑफिशियल जॉइन करो एवं तुमरो टेलीग्राम चैनल एवं हमरो ओएस रो व्हाट्सएप रे भी जॉइन करि परिबो 89 तो व्हाट्सएप रे तुम करिवो एंटर सेइथरे then what is the role did the INA trials play a facilitating role the process of Indian independence. Indian National Army INA trial hitla Red Fort are the crucial chapter in Indian history कहीं ना INA कथा पचार क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करिवाटा ही जदि भूल कर दबो ताले भूल आंसर तुमर पूरा बाहरी. So here question ask INA trials INA फॉर्मेशन पर पूर्व INA trials हेइथला दिल्ली रे ए ट्रायल बेसिकली कि आईएनएस सोल्जर कंट्रीब्यूशन कौन थिला अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष बोस एटा को उजागर कर से माने ब्रिटिश कॉलोनियल एगेंस्ट लड़ी थिले तांको एगेंस्ट ट्रायल करी कि कम्युनिटी बेसिस रे डिवाइड करी कि अलग अलग जगह रखी थिले. तो माने डिवाइडिंग रोल प्ले करूथिले एथि पई ये वेरी वेरी नेशनल एवोकनिंग एंड वाला फर्स्ट ट्रायल्स हैला प्रथम थर पई आईएनए या पूर्व आईएनए प्रति एते लोकंकर ये नथिला बट ट्रायल्स हैला नेशनल सेंटिमेंट पूरा इंडिया सारा जागृत लेकिन जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस रो समस्त लागिले तांको केमिति पड़ा जाऊ तांको केमिति पीपल ऑफ ऑल रिलीजन काहे कि से माने तीन जन को मारिया को चाहूथले अलग अलग रिलीजन कम्युनिटी समस्त यूनाइट हो गले सोल्जर मानकू ये जना पड़ा कि नेशनल सॉलिडारिटी कम्युनिटी धीरे धीरे कौन ना पेट्रियोटिक लेवल है आईएनएस सोल्जर जो सैक्रिफाइसेस पर्टिकुलरली आफ्टर द रिलेटिव
जोटा कि following the Quit India movement, relatively loss, relatively weak lull हवा जोटा कि बर्बाद हो जाइथिला क्विट इंडिया मूवमेंट रे ट्रायल ट्रांसफॉर्म इनटू ए नेशनल inspiring youth to fight for then political mobilization political Indian National Congress under the leader like Pandit Jawaharlal Nehru, Bhulabhai Desai took up the legal defense of the accused, turning the courtroom into a platform of political protest. This created intense public pressure, very important, and impact on armed forces. Trial deeply affected the Indian soldiers serving in Britain. It triggered mutinies against most notably the Royal Indian Navy Mutiny (RIN) 1946 and smaller uprising in the Air Force Army. The loyalty of the Indian forces become questionable कहने से माने जो loyalty थिला ब्रिटिश प्रति से loyalty कमी गला सेटा ब्रिटिश रूलर माने आउरी अलार्म हो गले डरी गले political realization of the administration realized that continuing colonial rule was unsustainable without the loyalty of the Indian troops जोंडी अलगा हो गले यांकर बिना loyalty रे तुम्हें accelerating discussion that eventually led to the decision to grant independence. Can you write this type of answer or not? Conclude करि परियो. So INA trial are more than a legal proceeding. They become a symbol of Indian unity, nationalism, by shaking the foundation of British and exposing their declining moral military control. The INA trials hasten the process of जल्दी कर देला. तो कौन पॉइंट आमे तुम लिखि परिबो आईएनए ट्रायल्स रो कौन हेल्प कला गुडेला नेशनल एवोकनिंग एंड यूनिटी रिवाइवल ऑफ द पेट्रियोटिज्म रिवाइव करला पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड इंपैक्ट द इंडियन आर्म फोर्स ये सब any doubt guys, anyone, any doubt? So value addition needs formation of INA December 1941 on Singh an officer thile Punjab regiment in surrendered to Japanese. Alongside Mohan Singh, numerous Indian soldiers are taken as prisoners of war after the British defeat. विजय जापान वाले नहीं थे. Recognize the an opportunity Major Fujiwara जे कि जापान रो आर्मी रो हेड थिले. A Japanese army officer persuaded Mohan Singh to collaborate for India's freedom by creating an Indian army. पार को धरी कि Indian army create कान कले. जापान वाला हरि देइथिले काकू. So initial development in the Indian Independence League civilian political body was formed to oversee the army March and June 1940. दास बिहारी बोस के मध्य जापान रे रिफ्यूज नैथिले एवं was elected president. Formal decision to raise INA was taken with by the end of 1940 INA strength reached 43 रे सुभाष बोस आसिले के यार एस्केप हेगी जर्मनी वगैरह बुलीगी गोटे प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट नेले 8 नेशन रिकॉग्नाइज भी करथिले जर्मनी एंड इटाली एजुम
struggle of INA struggle began with Japan handed over Andaman Nicobar Island administration to तो अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ से आसिल आईएनए प्रथम थर ପାଇଁ ସେଠି ଝଣ୍ଡା ଉଠେଇଲେ who's named Shahid Swaraj Island envisioned using them as a base can live आईएनए विषय तुम जानिब आईएनए ट्रायल सिग्निफिकेंस ये सब आम कहीदेले लीगल part of British decision to leave India start कला हमें हाँ डिटेल्स दरकार स्वदेशी मूवमेंट give an outline give an outline of the Swadeshi movement in Bengal between 1905 to 1908 analyze its impact on freedom Swadeshi movement 1905 to 1908 या ऊपर लिखिबो one of the first phases हेता डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू पार्टीशन ऑफ बेंगल थिला लॉर्ड एवं डिवाइड करथले से माने कम्युनल लाइन रो नेशनलिज्म जोटी ग्रो होतला बेंगल रे एटा को से डिवाइड करिया चाहू एंड आउटलाइन ऑफ द मूवमेंट 95 रे लॉन्च हला ये सब डिटेल्स रे हमें लॉन्च हला केबे कोन करा गला ये सब हमें डिटेल्स रे स्टडी करिचे ओके these are हमें नेक्स्ट क्लास रो देखिबा आउ दि तीनटा अछि क्वेश्चन मैं विल नेक्स्ट क्लास आई होप तुम्हें बहुत सारा इनफॉरमेशन पाई जाइथिबो वैल्यू एडिशन तुमको हेल्प करछु ना लेट मी नो सोशियोलॉजी फाउंडेशन बेस स्टार्ट हे आज टू स्टार्ट हे 1 तारिख मेंटरशिप भी सोशियोलॉजी रो मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज सेटा पाई परिबे खाली मेंस रो जीएस रो टेस्ट सीरीज हमरो 26 तारिख स्टार्ट होची 19 तारिख रो फ्री टेस्ट सीरीज से जॉइन करी परिबे एवं मेंस मेंटरशिप से वैल्यू एडिशन क्लासेस जोंडा कि मो पीवाई को माध्यम रे करोची से जॉइन करंतु ये नंबर कांटेक्ट करंतु 89 और 98271668 कांटेक्ट करंतु व्हाट्सएप थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग गॉड ब्लेस यू